Assalamu alaikum and welcome to another exciting episode of Promise Hub, where we explore leadership challenges, team dynamics, and the actionable insights to grow as a leader. I'm your host, Shrina Makhani, and today we're going to talk about a very fascinating topic, which as leader, as project managers, we always hustle with finding a sweet spot between autonomy and micromanagement. As leaders, we always caught either with too much oversight or step back and give freedom to our teams. But what is the right balance we have to strike to unlock the peak performance, trust, and the creativity of our team? Because that's the challenge we came across every time. आज की इस कॉन्वर्जेशन में हमें ज्वाइन करेंगे मिस्टर खुरम फवाद खतलानी हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एट सिस्टम्स लिमिटेड. Khurram has numerous years of experience in leadership development, organization growth, and team management. And he has spent numerous years as a coach to leadership development and growth. So, welcome, Khurram, to Prominds Up podcast. And thanks for joining us today. Thank you, Shanila, for inviting me and giving me the opportunity to share my experiences, what I've learned and what I've seen works actually in the practical lab. Great. So, Khurram, I think हम start करते हैं क्योंकि टॉपिक ऐसा है माइक्रो मैनेजमेंट एंड ऑटोनॉमी. सो आपकी अपनी पर्सनल डेफिनेशन क्या है अगर मैं बात करूँ माइक्रो मैनेजमेंट और ऑटोनॉमी की एज प्रोजेक्ट मैनेजर? Actually, these terms, micromanagement and autonomy, they are always contextual. For a person who is actually doing the job, same person can say that I'm being micromanaged. On the other side, the person who is managing that person can say, no, I have given you enough autonomy and I'm not micromanaging. So basically, when the micromanagement happens and when the autonomy is given, it's actually contextual. They are not absolute in terms. So based on the context, for example, today I was coming to this studio for the first time. And since you were meeting me for the first time, you made sure that do get the confirmation from me and you called me an hour ago. Please confirm are you coming or not. But if it was the 10th or 11th time, you might not have called me at all. Hmm. So if we are meeting for the 20th time and you are still calling me twice within an hour, then I'll say why you are again calling me again and again. This is micromanagement because you know that I am always there. And if I'm going to be there, I inform you. So this term micromanagement and autonomy is always contextual based. How much people know each other, which means also okay, how much they trust each other. Even if the trust is not there, how much they know each other. Based on that, this definition of micromanagement and autonomy does. So, can you share an example? I think you talk about it. I think with the real time scenario being covered today, I think very well said. But from your career span, because you have a huge career span, right? Can you share an example where you really struggled in between autonomy and I would say micromanagement with you as well or to your team? Actually, yes. Thank you very much. So as I said that it is really depending upon the person himself, who is the manager, who is doing that management, the micro or macro, plus the person who is getting that impact. So there's a difference between the expectation of these two persons. And based on the difference of these two expectations, so this term micromanagement or macro management evolves. For example, if I know that I have done a particular job multiple times and I'm very confident that how to do it, and yet someone asks me more and more probing questions. So I'll say that he is trying to micromanage me because I've already done that activity multiple times and I know how it has to be done. True. But on the flip side, if I have that manager and I know the person who is going to do that job for the first time, and if I let him on his own, then I should be ready for disasters because the person is going to do that very first time. So there could be a lot of issues which he might not have think of.
And I know of those scenarios. So I'll ask him questions. If you're going to deliver this, so how you are going to do it? Now I am trying to understand if the person who is going to do a job has thought over it well enough or not. Then this is not micromanagement from my point of view. And probably the person who is being asked might appreciate that, oh, I did not think of that portrait or that scenario or the constraint. And thank you for asking that question. Let me revise my plan. So then it is not a micromanagement. So, करीब तभी डेफिनेटली आता है कि अच्छा बड़ा टाइम स्पेन है करियर का। कभी आपने ये प्रॉपर एनकाउंटर किया अपने करियर पे टाइम स्पेन है या माइक्रो मैनेज हुए या आपको ऑटोनॉमी काफ़ी मिली हुई थी या आपकी टीम ही फील है या माइक्रो मैनेज करते हैं? Yes, it actually always happens. It happens again as a personality, your personality, you by default are a micromanager or not. And then either by default you're a micromanager or not. That is one thing. Despite that, there would be scenarios then people would think that you are micromanaging even though you are not. I'll give you a very simple example. If I ask someone on a daily basis, what is your plan today? And what will be able to achieve today? And did you achieve yesterday anything? The person can say, you are micromanaging me. That is given that on a daily basis. The whole team will assemble, will let them know what they have achieved yesterday and what is their plan for today. Now, nobody would be going to call it as a micromanagement. Why? Because the context is set. This is how it has to be done. And the benefits of this. Till that definition was not there. If you have done that same drill, you are considered as a micromanager. But it is no more the case. And you have a very glorified term for that, who is called the Scrum Masters, Yeah. who make sure that this happens on a daily basis. That's why I'm saying this is always contextual. Quite a good example, I believe. And a quick rollover from Matsya you're highlighting. So, Karam, we all know sometimes one else प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो है वो माइक्रो मैनेज करते हैं समटाइम्स कर जाते हैं करने आप चाहते नहीं है बट हो जाता है मैं भी प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ आई कैन कम्प्लीटली रिलेट टू इट राइट कि हमारा इंटेंशन नहीं होता बट शायद वी आर इंटेंशनली डज दैट राइट बट इट हैपन्स कि वो लाइन क्रॉस हो जाती है जो ऑटोनॉमी और माइक्रो मैनेजमेंट के बीच में होती है तो व्हाट डू यू थिंक कि जब हमें सिचुएशन में होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर्स माइक्रो मैनेज करते हैं राइट तो कौन से फैक्टर्स होते हैं क्या वो फेयर होता है वो प्रेशर होता है जो एट दी एंड प्रोजेक्ट मैनेजर्स फील एंड देन दे अनइंटेंशनली बट डू द माइक्रो मैनेजमेंट बिकॉज अगर आज मैं तो ज़्यादा बात करूँ आप और मैं यहाँ बैठे हैं ठीक है हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं जब आई थिंक इस पॉडकास्ट को लोग देखेंगे तो कहेंगे "ये खुद कितनी माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं राइट सो अनइंटेंशनली बट इट हैपेंस राइट तो वो कौन से फैक्टर होते हैं आपके ओपिनियन में कि व्हिच एक्चुअली कंट्रीब्यूट टू इट? Yes, definitely. In terms of the project management, we all know whenever a project starts, the first sword on your head is the deadline. Yeah. Irrespective of cost, irrespective of quality, the first thing you are told that this project has to go live by a particular date. And if it does not, so there is this other term called, which is called time to market. So I am going to launch a product on a particular day. Let's say it is an Xbox. It has to launch at the start of the locations, because if I miss that date, then I'll be losing a very big customer base. So the most of the projects actually time bound to the most. And then the second constraint, which sometimes the management shares with the manager or the team or not, and that is called the cost. A lot of software development projects, their cost is not shared with the team. I am not into that. I also prefer that they also know the actual impact, and that is the cost. And the third thing, which is underlying, is that is the quality that you have to deliver, and there is a certain expectation of that, and that is the quality as well. So you have to maintain that as well. So once these things are known, so it is the pressure from the start. Yeah. Because you already have everything constrained.
You cannot go out of that boundary. So, so the better project management would mean that in those constraints, you are able to break down the book and you are able to reasonably define the timelines for each of the milestone, and then you track against those only. So when we say micromanagement, it actually boils down to you are now interfering in how the person is working instead of if the person is believing on time and quality of. For example, when we say micromanagement, so when we know that I have given you the commitment at the start of the day in the morning stand up that I'll be delivering this by the day end. So our now expectation is the thing would be ready by the day end. Then I should not be bothered after every hour. Are you on target? Are you on target? Are you target? No, this is frustrating for the person who is going to work because that is the unnecessary stress you are adding to the person's head. Then this is called micromanagement. But this is not micromanagement if I have a commitment with you at the start of the day that what we will be able to deliver. Now expand this thing. If I am going to ask you at only at the end of the sprint, are you done or not? So you say you gave me the autonomy for the whole sprint. You should not be coming to me in between the sprint. Now again, it really depends upon the trad report of a person. Was the first sprint was really successful? It was delivered as per the expectation. Then you have automatically trust and confidence in the team, and you should not be bothered. But if still you are asking then after every day that how much of it is done, then definitely it will be done on micromanagement. So I think I can completely relate to it. There we come across such things. लेकिन खरम अगर आई ऑलवेज से कि मैंने मेरी टीम को ऑटोनॉमी दी हुई है, राइट? लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम समटाइम्स वो ऑटोनॉमी ऑटोमेटिकली माइक्रो मैनेजमेंट में थोड़ी सी कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। वो साइंस क्या है जो कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर को वो इंडिकेटर्स दें कि माइट बी यू आर ट्राइंग टू माइक्रो मैनेज पीपल, maybe you need to step back and reflect, and then you need to go back and, with those autonomy and the trust you have with the team, how you can manage them. तो वो साइंस क्या है जो कि वो ऑटोनॉमी और आई वुड से माइक्रो मैनेजमेंट की जो वो फाइन लाइन होती है ना, उसको हम क्रॉस करना है, राइट? वो इंडिकेटर्स आपकी नजर में क्या है कि जिसके हम As I said at the start, it is really the difference between the expectation from the two parties who are involved in that. So if the expectations from the start are clear that this thing has to be delivered by this time and this is the quality expected, this will be the, for example, the template that you will be filling. And I have seen you already done that. So there is no gap and there is complete trust. But now comes the person is going to do it for the first time. So how I will avoid micromanagement in the, let's say, the spread is of 1 month. So in the first week, I spend more time delving into more of the things directly, how they are working. If I feel they are doing it the right way, so as they say, trust the process. So if you are confident in the process which they are adopted and that is starting working, so then you have to step back and you do not have to further interfere with that. Otherwise, this will become micromanagement when they feel they are working fine and they are very confident to achieve that deliverable. And yet, you are daily basis, for example, you are trying to see their page, how the page will be looking like after every day, because there would be a lot of work to rework as well between that time as well. So if you are going to look at the thing which is half cooked, so you will get the wrong impression that the thing is not fine. But that is not the case unless until that thing is not ready. So as I said, micromanagement is a feeling between two parties, whether this is micromanagement or not. I'll give the example of the DB stand up till the agile
methodology and the Scrum was not introduced in the software world. So if somebody has called you every day and have asked you, so what are you planning to do today? So that manager would have been called a micromanager. But this is not the case anymore because the expectation is very clear that it has to be done like that. It is no more micromanaging. That's taken an extreme example. If the deliverable has to be delivered within a day and the stakes are very high, so you might be sitting with the team and they would be perfectly okay with it. Yeah. Because there is no minute to be wasted. Nobody can afford any type of event. So let's monitor it from start to end throughout the day. It will not be micromanagement. Even they feel more comfortable, right? That the project manager is sitting with them, so don't need to, bother. They don't need to, wait for everything. The problem just gets solved because project manager is right there with them. I completely agree, and I think I agree with those words and said, like, trust the process. Because that is more important. खुरम एक चीज़ है हम ऑब्जर्व करते हैं थोड़ा सा माइक्रो मैनेजमेंट से आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम इकोनॉमी पे बात करते हैं समटाइम्स वी फेड और बहुत से लोग इस बारे में कहते हैं कि यार मैंने अपनी टीम को बहुत इकोनॉमी दी है दे हैव कंप्लीट फ्रीडम टू डू एवरीथिंग राइट लेकिन उसके साथ बहुत सारे रिस्क इन एसोसिएट होते हैं राइट कि टीम को ऑटोनॉमी लाइक वी विल से दैट तो हम टीम को ऑटोनॉमी देंगे राइट तो वी गोइंग टू काउंटर दिस इशू एक्सेट्रा तो what do you think? What are the risks of giving autonomy to the team or too much autonomy to the team? Actually, there is no such thing as 100% autonomy. For example, a regional manager Hmm. has the autonomy to manage the team, but then he is also accountable for the output. If the accountability is not there, so then that autonomy usually will lead to a disaster because there are no consequences us in free. So it will be perfectly fine if you fail because you have been given autonomy. For example, if I am department head, I have the autonomy on some particular things, but this is not 100% autonomy. I have a budget as well that I have to manage. So I don't have the autonomy to spend as much as I want. There is a cap. So this happens for every organization. Take the example of my company's CEO. So people would say that he has the 100% autonomy, but he is answerable to the stakeholders. He goes with the board of governors meeting and shares what he has delivered, what he has done. And then he has been given some targets for next year as well. So there is no such thing as 100% autonomy. The autonomy is based on some KPIs. Okay, you have to achieve this thing, this, and you will have the facilities and luxuries of this. In between these, how you want to work, it is up to you. So basically, when we say the autonomy, it means how they would be delivering that is up to them, but what they have to deliver and in which constraints, there is no auto. That they have to abide by that. So when we say I given complete autonomy my team, so what does this mean? It means I have given them the freedom that if they want to work in the day, if they want to work from home, so I have given the autonomy in the particular aspect. Hmm. But there could be scenarios where the interaction in person has to be there. Otherwise, it weakens the bond between that team and the output drops. So you'll take back that autonomy and then you'll ask them to meet in person at least twice a week so that the bond between two remains there. Otherwise, you will face a lot of complaints that I was trying to contact the person, but he was not there. Yeah. The common complaint actually. Don't complain because everybody is working in his different silo. So they have no agreement that in which time zone they has to be there for each other. Hmm. So then you will restrict the autonomy. The autonomy would be okay, you can work from home or you can work from office, but you have to make sure that between these hours, if someone needs you
from the team, you are there 100% of the time. So you have taken back the autonomy. It is not that you have said, okay, if you want to meet the person or not, it is up to you. There is no autonomy for that. So that's why I again and again said this autonomy, we can very casually use this term autonomy, but actually it is based on some KPIs and accountabilities associated with that. With those, you have the autonomy. Otherwise, there is no 100% autonomy or I completely agree. I think is ENA bond, I would say autonomy and accountability. They both comes hand to hand actually. Right? Without accountability, autonomy have just the risk associated. So we definitely want to look good. We want to be good with the people. We want that our team always praise ourselves कि हमारी टीम को अच्छा लगे कि वो हमारे साथ काम करें. And they always want us to work with them. लेकिन हमें एक अकाउंटेबिलिटी का भी जो वो सिस्टम डेवलप करना पड़ता है टीम के अंदर कि दे हैव द ऑटोनॉमी बट एट द एंड या फॉर देयर केपीआईज दे आर अकाउंटेबल एज वेल. correct. तो क्या आई कंप्लीटली एग्री विद इट. I give you another example from the sports. So, for example, there is a hockey match going on. So, what is the trust? The trust is when I'm going to make a hit from one side of the field to other one, I trust that my team member would exactly be in that position to receive that ball. And I'll, based on that trust, I'll make that hit. And I would be trusting that he is competent enough to assess my next move. And he would be already running to that spot where he has to gather that ball. That is the trust, and that is based on the mechanism between the both of the parties. It's never the one way. I think trust plays a very important role, right, for the to give it autonomy to the team, right? Sometimes I felt that कि वो टीम होती है लेकिन बहुत ज़्यादा autonomous होती हैं, they made their own decisions and they work. मगर समटाइम होता ये है कि वो जो ट्रस्ट होता है मैनेजर का उस टीम पर, राइट, वो समवेयर कहीं ना कहीं ब्रेक होता है माइंड टू द आउटकम दे हैव डिलीवर्ड. और फिर वहाँ पे एक वो जो ऑटोनॉमी दी होती है ना उसको वो थोड़ी सी पकड़ आती है कि वाई बी वी नीड टू हैव अ लिटिल बिट कंट्रोल इंस्टेड ऑफ विल गिव कंप्लीट ऑटोनॉमी टू द टीम बिकॉज ट्रस्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. Even I shared example कि I had a developer in my team, right, who was working from Skirdu, right? और वो ऑपरेट ही एक्चुअली जो काम करता था वो रात को जो है वो 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक कर रहा होता था. द एंटायर टीम इज वर्किंग ड्यूरिंग द डे टाइम और वो जो है वो रात में काम कर रहा था और उसके आउटपुट के ऊपर एक्चुअली रेस्ट ऑफ द डे हैज टू बी वर्क ऑन. बट देयर वाज नॉट अ सिंगल डे, राइट, कि जब मैं मॉर्निंग में उठी हूँ और मैंने उसका आउटपुट नहीं देखा हो, राइट. एंड इट्स अ क्वालिटी इनपुट टू द रेस्ट ऑफ द टीम मेंबर्स कि वो उसके बाद रेस्ट ऑफ द डे पर ड्राइव करते थे. सो एंड वी हैव नो प्रॉब्लम, राइट, स्कर्दू में बैठो या यूके में बैठो, इस तरीके से जो है वो डिलीवर कर रहे हो. तो वेदर यू आर हियर इन फ्रंट ऑफ मी और वेदर यू आर वर्किंग फ्रॉम देयर, राइट, बिकॉज दैट ट्रस्ट ही हैज डेवलप्ड थ्रू हिज वर्क. तो समटाइम्स ये भी होता है एंड दैट्स माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज दैट कि समटाइम्स जो ना एक टीम को वो एटमॉस्फेयर डेवलप करना पड़ता है, राइट. डे वन से टीम के पास ऑटोनॉमी नहीं आती है, राइट, बिकॉज प्रोजेक्ट मैनेजर भी नया होता है, टीम भी नहीं होती है. And then both needs to actually prove themselves in order to come on a common ground, right? How they would operate, right? So, in conditions that what do you suggest to the project manager? बिल्कुल ठीक था आपने जैसे जैसे rightly said that trust actually is earned, Hmm. not given. Exactly. So take for example a fresh graduate. You hire a fresh graduate in your team, Hmm. and you trust the person would deliver because you have seen that he has gained particular grade in the university. So your assumption is he is good in that thing already. So that is a thing which is already done, has happened in the past. And trust is always based on something which has already happened in the past. So if someone told you that this is the person I'm going you as a team member, let's say architect. So it means you are trusting the term architect because if some person has reached that goal, it already is established. The person has delivered something of that level. That's why you are trusting that role which is associated with that person. So the trust is based on what the person has already achieved.
whether it is a fresh graduate, your KPI is based on the fresh graduate, what is expected of fresh graduate for being trusted. Same is the case of a very senior team member who has a 10 years experience. So you have expectation a person having 10 years of development experience must be knowing these things. And then you'll ask some questions for the background. So what was the last project the person worked on? How the person delivered that project? What were the issues which were faced by the person and how he responded those? So you'll assess his behavior, his reaction, his emotional intelligence, and say, okay, whether I can trust that person from the start or there are red flags which I might be should take care of. We can, on the face of it, say, I really trust you. But are you sure? Are you saying your mouth out or you really trust the person? Because if you have seen the track report and have you seen praises from others about that person, so you are trusting that person because of those praises which other people are giving to that. And you trust that the same would carry for you in your project as well. There is no such thing as blind trust. I agree. And even, when we see the feedback of others and we trust that resource or person, it's not 100% because you're still waiting for that he has to prove at least for me. Then I can trust 100%. But yeah, a good role those feedback plays in order to at least initiate it. So यहाँ के थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. करो समटाइम्स डेफिनेटली इसके ऊपर हमने जो शुरू में बात की कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट द एक्सपेक्टेशंस टू द टीम, राइट? और यहाँ पे हमारे कभी कभी नहीं बल्कि अक्सर आई वुड से दैट कम्युनिकेशन फेलियर्स ऑफ हैं, राइट? We don't communicate the correct expectations or the right expectations to the team, right? We give them autonomy, right? And mistakes. So, what you suggest are the good communication mediums and the tools and approaches to communicate those expectations to the team, right? So, the which project managers can at least use those approaches, right? So, definitely we all have made these mistakes, right? And let's be honest. हमने अपनी मिस्टेक से बहुत सीखा है और शायद मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा की हैं in order to learn it in a very hard ways, right? Correct. So, what do you suggest to all these experiences, right? कि क्या वो communication approaches होनी चाहिए? So basically, there are two types of scenarios for project managers. Number one, you are already expert of the domain and we have been made project managers. So how now you are going to behave with the team which is given to you compared to the person who is made project manager, specifically Scrum Master, and that person is not expert of the doing or the technology. So how he is going to trust? So it is the other way around. So now the team would be worried whether this project manager actually knows what has to be done and or how has to be done. So where the person should be focusing on more and where should not. And in fact, it goes the other way around because then the people start exploiting the project manager because project manager does not have the command over the domain or the technology stack. So simple as that. So the person who is the most the subject matter experts, that's why if you are very, very lucky, the subject matter experts would be very sincere with you, will make sure that he informs you about the issues which can come. But if you are not lucky enough, so the person would actually hide those things from you. And though you will go into trouble later on. And then at the time you will have a total lack of trust on the person. So to start with how to communicate, I always start with the starting point for any project should be the SOW. You have been given the scope of work. Then you should be asking I would say that you should be reading the RFP, you should be reading the SOW, you should be reading the proposal which was submitted based on which you won that work. Because there are some over commitments mentioned in that proposal. Absolutely. Which sales say you have to do, but they might not be possible. So the thing is, you must know first the biggest picture so that you know where do you stand in the bigger picture and how to achieve the bigger picture. You must know the why the customer launched that product.
If you are only focusing on your own deliverable, that is a high possibility that your work output would be totally out of sync with the expectations. For example, uh, you are going to make a web page and you are focused on the web page, how it should look, how it looks good as per your understanding. However, there is a case, the segment which is going to use that web page has a different uh, preferences uh, from visual point of view. For example, the web page is called the LLEs 60 plus. So they won't be interested in the fonts which are 8 size. They might be interested in 18 size. So you must know that. Unless and until you do not know the bigger picture, the complete scope, whatever you are going to deliver or you are going to prepare, you might not be motivated. The project manager other role is to make you understand that how your work is very important and how it is going to be plugged into the bigger picture. I'll give very small example. 10 years back, some junior, I asked, so how are you doing? What are you making today? What is your assignment for this week? She told me that I'm working on a date picker. So, like, that's very crucial thing to make. Do you really know that? She said, why? It is just a date picker. Oh, well, oh, because now you learn to replace a date picker with a manual entry of date. So, for example, 11/12 means November 12th or 11th December. There's a hell of a difference between these two. And that's why when you replace that manual text box with a date picker, this makes a huge impact on the overall application because you have eliminated any chance of any mistake of putting a wrong date. And based on those dates, your whole calculation of loan drastically change. So whatever you are doing is extremely, extremely important for this application. Do not take it very lightly. And total SaaS was after that is entirely different. That I'm doing something is very, very important for the date. It's not a just date wizard. Yeah. It is going to have a very big impact on the whole application. So you have to make sure that people are able to understand how their individual work connects to the bigger picture and why it is very, very important. So every work is important if done in the right way. And but if they don't have the clear visibility, so they would be delivering something which might not be of that excellence which they would have achieved it if they were aware of that. So my first thing would always be I make sure that I keep my team informed about what is happening in a bigger picture. For example, in the current project, so I always have a monthly connect because one team member complained that it's been 2 months, we do not know what is happening in the bigger picture. Thus, I accepted that, said it's my step, I should have done that. So it is a regular practice. Then every month the whole team assembles and I give them the whole picture, what has happened, what is going to happen, what are type of CRs are going to come, and what issues we are foreseeing and what challenges we are facing. So if you think that there are some issues or it is more associated which I am not able to identify, please do share so that we can incorporate them as. So it gives an impression of sense of belonging with the team. That we matter. Hmm. Our feedback is being taken. Yeah. So this builds trust. So communication is American term. They say communication is not just you have said something and you have assumed that it has been received. No, you have to make sure that whatever you have said has been understood in the same way how do you intend to. You have to take the confirmation. So what you have understood based on what I have said, can you rephrase and tell me back? So you'll be able to understand the person if receiving that information correctly or not. I think that's true, I think. So, Karan, तो क्या आप जब ये बात कर रहे थे, there was one more thing coming into my mind. एक तो है एक्सपेक्टेशन सेट करना, राइट? लेकिन हम बीइंग प्रोजेक्ट मैनेजर्स एक और चीज़ में आई थिंक हम बहुत फंसे हुए होते हैं डिलेमा के अंदर, एंड दैट इज टू गिव फीडबैक व्हेन द एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मीटेड, राइट? समवेयर ये होता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर्स समटाइम्स सिक्योरिटी टीम प्रोजेक्ट मैनेजर्स को रिपोर्ट कर रही होती है, राइट? सो लिटिल बिट उनके लिए थोड़ा सा फिर भी ईजी हो जाता है
समटाइम्स जो है वो फंक्शनल एनवायरनमेंट्स के अंदर जहाँ पे टीम्स प्रोजेक्ट मैनेजर को रिपोर्ट नहीं कर रही होती, बट वो उस प्रोजेक्ट के लिए असाइन होती है, ठीक है? वहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर को एक ये भी होता है कि यार मैं फीडबैक दूँगा, हाउ इट्स गोना बी टेकन, एंड देन अगेन वो शायद डायरेक्ट फीडबैक नहीं दे रहा, वो एक लेवल पे फीडबैक दे रहा है, फिर वहाँ से आगे वो फीडबैक ट्रांसलेट हो रहा है एंड ऑल दैट, ठीक है? लेकिन एक और भी चीज़ है कि इस पूरे मैटर के ना समटाइम्स वी सी कि हम एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन फीडबैक देना या वो कन्वर्सेशन करना हम अवॉइड करते हैं। उससे ये होता है कि चांसेस ऑफ फेलियर्स और बढ़ जाता है। एक तो परफॉर्मेंस नहीं आ रही, ऊपर से चांसेस ऑफ फेलियर्स और बढ़ जाए, राइट? बिकॉज़ कि वो हम कहते हैं कि ये डिफिकल्ट कन्वर्सेशंस होती हैं, राइट? एंड डिफिकल्ट कन्वर्सेशंस आर डिफिकल्ट टू हैव, राइट? उसके लिए वो करेज चाहिए होता है, वो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, राइट? सो बट व्हाट डू यू थिंक, आपके ओपिनियन में क्या शुड प्रोजेक्ट मैनेजर्स डू सच डिफिकल्ट कन्वर्सेशंस? Yes, I give you an example. The top athletes of the world, the gold medalist of Olympics, they also have coaches. Yeah. So the biggest relationship between the top athlete and a coach is based on the trust. That athlete trusts that whatever his coach is going to tell me is going to make me better. Yes. And it is not a criticism just for the sake of fix. If that trust is not there, you will not be you won't be able to have those difficult conversations, because coach main job is to identify all the weaknesses, all the areas which can be improved, and ask you to do actions which can overcome those weaknesses. And since the athlete who is actually among those top 10 or 20 who are going to win that Olympics gold medal at the highest level still trusts that the coach, whatever is telling me, is going to improve my game. So it is not a one side project manager's thing. It is also the responsibility of individual to understand that if something is going to come as a criticism, it is going to improve the output for the project. If that does not happen, we will not be able to have those difficult conversations, which could always lead to negative side impacts. So, yes, as a project manager, if you see that some of your team member is lagging in the output, we first must try to understand, is this because of there's some personal challenge with the person? For example, there he is an issue at the family end. Because of that, he is disturbed. Why the motivation is lacking? There is something which I am not doing. He feels that he is being ignored. What is the reason? So first you have to do the homework, that why it is happening, instead of assuming the person to be bad. Otherwise, you are going to have a difficult conversation which is going to only negative, because you are going to criticize the person. You are not going to criticize the output, you are going to criticize the person. So, in the feedback, we have to make sure that we identify and focus on the problem we are facing, not the person. For example, I say, यार, the point is कि हमें ये deliver करना था, अब तुम ये deliver नहीं कर सके. What can be the reasons? जिसकी वजह से तुम्हें अगली दफ़ा वो चैलेंज ना आए. क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता था? क्या कुछ चीज़ ऐसी थी जो मुझे पहले पता होती, या तुम मुझे बता देते, तो हम उसको पहले एड्रेस कर लेते. तुमने इस चीज़ पे सोचा कि नहीं सोचा? या तुम्हें कोई चैलेंज आ सकते थे और तुमने बताया नहीं, हालांकि वो तुम्हारी इतनी फेवर में जाना था, अगर तुम पहले से प्लान रेज करते थे कि यार इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इस वजह से ना हो सके. तो जब हम फीडबैक देते हैं तो इट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन एम्पैथी, सिंपैथी नहीं, एम्पैथी, कि यू आर क्यूरियस अबाउट व्हाई इट हैपेंड and what were the reasons which might have caused that. We try to identify those and try to solve this. If you can do that, it will be a win-win situation. Otherwise, यार तुम्हें काम कहा था, तुमसे वो भी नहीं हुआ. आप अगर ये स्टेटमेंट आपने स्टार्ट में दी है, तो इसके बाद तो उससे सिर्फ डिफेंसिव ही लोग है ना. अभी यार उसने तो फिर आपसे बेसिकली अपनी उसने कोई चीज़ इम्प्रूव नहीं करनी है, क्योंकि आपने तो उसको दे दिया था ना. अब आप जो कहते हैं ना, जो उखाड़ रहा है उखाड़ लो, अब कुछ भी हो सकता, क्योंकि आपने स्टार्टिंग जो है ना वो नेगेटिव तरीके से की है.
क्योंकि आपने एक बंदे को एक्यूज़ कर दिया विदाउट आस्किंग, यार क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से हम ये अचीव नहीं कर सकते? क्या वो प्रोसेस की वजह से था? क्या तुम्हें वो चीज़ आती ही नहीं थी? या तुम ओवरसी नहीं कर सके सही इसको, ओवरसाइट हो गई? क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से? हम कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं? ये तो पहले हम डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन करेंगे ना। हाँ, अगर वो डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन अगर अगर आपको हर मंथ करनी है, तो देन दैट्स बेटर। तो इसका मतलब है नाउ द प्रॉब्लम इज़ द पर्सन, बिकॉज़ द पर्सन इज़ नॉट चेंजिंग एंड दैट्स व्हाई द आउटपुट इज़ नॉट चेंजिंग। आपने प्रोसेस को खंगाल के देख लिया, आपने प्रोसेस वाज़ फाइन। आपने टूल्स को खंगाल के देख लिया, दे वर परफेक्टली फाइन। आपको कोई और कंस्ट्रेंट एक्सटर्नल नज़र नहीं आए, तो फिर आपके पास सारे एग्ज़ॉस्ट हो गए हैं और आपने सब चीज़ें ट्राई भी करनी और फिर भी चीज़ चेंज नहीं हुई, तो फिर एक ही चीज़ रह जाती है जिसको चेंज करना होता है। जिसको हम कहते हैं आइदर यू ब्रूम दैट और ब्रूम दैट। पहला ब्रूम होता है साफ़ करना और दूसरा ब्रूम होता है सफाई करना। तो पहले आप साफ़ करने की कोशिश करें और उसके बावजूद भी फ़ायदा नहीं होता, तो फिर आप चीज़ को वहाँ से हटा देते। बट यू हैव टू हैव दैट कन्वर्सेशन विद एम्पैथी इन योर एटीट्यूड, कि बेसिकली आप पहले आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ ख़राब हुई क्यों? अगर हमने सिर्फ ब्लेम कर दिया तो ज़ाहिर बात है कि कोई सॉल्व नहीं होगा। तो दूसरा बंदा भी डिफेंसिव हो जाएगा, वो ना आपको कुछ जवाब देगा, ना आपकी बात को डाइजेस्ट करने की कोशिश। आई थिंक आई कंप्लीटली एग्री विद यू कि नॉर्मली व्हाट आई हैव ऑब्जर्व ना कि हम स्टार्ट ही ब्लेम से करते हैं, राइट? और चूंकि वो स्टार्ट ब्लेम से होता है ना, तो समझ लें कि वी आर एट द लास्ट स्टेप। उसके बाद भी वो जितनी भी देर बैठ जाओ या कॉन्वर्सेशन कर लो, वो मैटर नहीं करती, बिकॉज वो स्टार्ट ही एक्चुअली पॉइंट थोड़ा सा गलत हमने स्ट्राइक किया। आई कंप्लीटली एग्री। खरुक दिस हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, राइट? आपने काफ़ी प्रोजेक्ट्स मैनेज किए हैं और तो डेफिनेटली everybody has ups and downs in the career, okay, right? And कोई ऐसा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट या कोई ऐसा प्रोजेक्ट या कोई ऐसा एग्जाम्पल हो गया आपके करियर के अंदर, where you see के आपने ऑटोनॉमी और माइक्रो मैनेजमेंट के बीच में राइट बैलेंस को स्ट्राइक किया? ये मेरी अपनी परसेप्शन हो सकती है। जैसे कहते हैं ना कि यू आर नेवर एज़ बैड एज़ एवरीबॉडी टेल्स यू व्हेन यू लूज़, एंड यू आर नेवर एज़ गुड एज़ एवरीबॉडी टेल्स यू व्हेन यू विन। तो द थिंग इज़ ऑलवेज़ इन बिटवीन। अगर कोई चीज़ अच्छी हो जाती है तो हर चीज़ बल्ले-बल्ले हो जाती है, और अगर कोई चीज़ फेल हो गई तो उसमें सब कुछ ही गलत हुआ था। ऐसा होता नहीं है, बल्कि मैं किसी से कह रहा था कि वी शुड सेलिब्रेट द फेलियर्स एज़ वेल। उनकी सेलिब्रेशन का मतलब ये होता है, कैन वी लर्न समथिंग फ्रॉम दोज़ फेलियर्स, कि हमने इसमें ये बुरा किया था लेकिन हमने इसके बीच में ये अच्छा भी किया था, एंड वी शुड एप्रिशिएट दोज़ एज़ वेल। ऐसा ना हो कि उस फेलियर के बीच में जो चीज़ें अच्छी की थी हम उनको भी ड्रॉप कर। तो इसीलिए जब आप वो रेट्रो करते हैं तो उसके अंदर आप स्टार्ट इससे करते हैं कि हमने अच्छा क्या किया, व्हाट वेंट वेल? पहले उसको डिस्कस करो, वरना आपका माइंड जो है ना वो नेगेटिव उसके स्पाइरल में चला जाएगा और पता चला अगली दफ़ा सब कुछ ही खराब कर रहे हैं। क्योंकि आपने अच्छी चीज़ को एप्रिशिएट ही नहीं किया, वो लोगों ने कहा अरे सुनो ये एप्रिशिएट ही नहीं किया, लेट्स इग्नोर दैट। सो वो देखता ही कोई नहीं है, इसको छोड़ दो। तो सबने छोड़ दिया। आपने सिर्फ जिसको क्रिटिसाइज़ किया था हो सकता है वो ठीक हो जाए, लेकिन जिसको एप्रिशिएट नहीं किया था हो सकता है वो भी ड्रॉप हो जाए। तो एक बड़ा मुश्किल है कहना कि जी मैंने क्या किया था, मैं तो हमेशा इसको कहता हूँ कि पीपल शुड टेल। ऐसा होता है कि मुझे आता है कोई पुरानी किसी प्रोजेक्ट में उसको मिलता है यार, वो डेली मिलता है, शुक्रिया अदा करता है। कहते हैं यार आप बहुत अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर थे। मैंने कहा यार अच्छा, उस पूरे प्रोजेक्ट में तुमने किसी ने ऐसा फील होने नहीं किया। कहते नहीं भैया, अब हम जिस प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ काम कर रहे हैं अब हमें आइडिया हो रहा है कि आप बहुत अच्छे। तो ये जो टर्म है ना, ये बड़ी रिलेटिव है। और मतलब किसी ने कोट कहा हुआ है कि इफ़ यू वांट टू मेक एवरीबॉडी हैप्पी, सेल आइसक्रीम। अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल कि एवरीबॉडी वुड रिमेन हैप्पी विद यू एंड स्टिल यू आर एबल टू अचीव गुड सक्सेस। आप जितने बड़े नाम ले लें वो बेसिकली कहीं ना कहीं अपनी टीम को पुश दो ज़रूर करते हैं। चाहे वो आपका स्टीव जॉब्स हो गया, वो जो जो उसके साथ काम करते रहे उनको पता है कि वो किस कदर क्रिटिकल होता था वो जो प्रोडक्ट बनता था उसके, कि क्या बना है, क्या बकवास चीज़ बनी है, क्योंकि वो एक्सेलेंस अचीव होती ही नज़र नहीं आ रही। लेकिन आप बेसिकली लाल-ताल लोगों को नहीं कर रहे। कह रहे हैं कि यार यू कैन डू बेटर देन दैट, दिस इज़ डिफरेंस है। हाँ, मेरे साथ हुआ था एक प्रोजेक्ट के अंदर ऐसे ही। एक टीम मेंबर थी, उस बेचारी को क्रिटिसाइज़, टीम लीड थी, लेकिन उस वो बेचारी थोड़ा कुछ ना रगड़े में आ गई कस्टमर के साथ, ज़्यादा एस्केलेशंस हो गई, बड़ाई हो गई कि यार ये अच्छा ये नहीं है, अच्छा वो भी नहीं है। तो शी वाज़ वेरी डाउन।
मैंने उसके साथ एक में सेशन किया, मैंने कहा यार आई रिफ्यूज़ टू बिलीव दैट यू लैक करेज, क्योंकि मैंने तुम्हें इस जगह पे तुम्हें यही अचीव करते हुए देखा हो। सो आई रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट कि यू कैन नॉट डू दिस एंड यू आर वे वे बेटर देन व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ, राइट? So you have to live up to your expectation and what I'm expecting from you, because I see that we can achieve this. So बार जो है आपने बार को ऊपर करना है एंड यू कैन डू दैट। बजाय ऐसे कि यार मतलब नेगेटिव मैनेजमेंट क्या होती है, अबे यार तू तो है ही घटिया है, तेरा तो बस का नहीं है। अब आपने लान ताने चल रहे ताने देने जो टीम पर क्या बोल रहे लोग, क्या बोल रहे लोगों का बेसिकली इसके बजाय ये कहने के आप कहेंगे यार वट एवर यू हैव डन, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट यू गाइस कैन डू इवन बेटर देन दिस। तो वो बंदा कहता है यार अच्छा है, इसकी एक्सपेक्टेशन उससे कुछ ज़्यादा है, चलो ज़ोर भी लगा के देख लेते हैं, हो सकता है बाकी इतने अच्छे हो। तो ये भी होता है कि आपने उनके डाउट क्रिएट कर दी कि यू आर बेटर देन दिस, यू कैन डू दिस, आई एम श्योर ऑफ दिस। तो कहते हैं अच्छा यार चलो देखते हैं, हो सकता है ऐसे ही हो, वरना आप ये कहते हैं यार तू तो इस काबिल ही नहीं है, तो वो बंदा वैसे ही डाउन बन जाता है कि यार मुझे मैं हो, आप पहली मिस्टेक कर चुके हो, ऊपर से आपने और उसको जो है लान तान शुरू कर दिए, तो वो और नीचे गिर जाए, वो ऊपर पे नहीं उठे। जब कोई बंदा डाउन हो रहा होता है उसी वक्त उसको खड़ा करना होता है, भाई ऐसे क्या आप और मानना चाहिए तो। वेरी वेल सेड। आई थिंक जब कोई डाउन हो रहा होता है, ओके, दूसरों पर आना होता है। आई कंप्लीटली हाँ, वैसे ही है तो। लेकिन इसका फ्लिप साइड भी है। उसका फ्लिप साइड भी ये है कि आप किसी एक प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो आप ये एज़्यूम करने लग जाते हैं हम बहुत अच्छे। जिसको मैंने पहले गुरुबिल कोट कहा था ना, कुछ से रिलेटेड एक और चीज़ है कि बेसिकली सक्सेस इज़ द लाउज़िएस्ट ऑफ द टीचर्स। आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया और आपने एज़्यूम कर लिया कि आपकी वजह से अच्छा हुआ है। हालाँकि उसमें बहुत सारे फैक्टर एक्सटर्नल थे जिनकी वजह से प्रोजेक्ट सक्सेसफुल, आप अकेले नहीं थे। तो आपको फोकस व्हेन यू हैव अ सक्सेस, you should focus on the weaknesses or blunders which you made। ये वो टाइम होता है जिसमें आप कहते हैं अल्लाह मेरे को यार मेरी इज्जत रख ली, लेकिन मुझे पता है मैंने कितने कितने बड़े बंड मारे थे उसके अंदर, उसके बावजूद बचत हो गई। लेट्स मेक श्योर नॉट बुक। और जब आप फेल हो गए और आपका प्रोजेक्ट फेलियर डिक्लेयर हो गया, आपने अचीव नहीं किया, देन एट द टाइम यू शुड मेक श्योर दैट यू फाइंड आउट दोज थिंग्स विच यू डिड व्हाट विच योर टीम डिड, और आप उनको जाके शाबाशी दें। यार ठीक है, टीम तुझे जो कहती है लेकिन तुमने ये जो काम किया था, ये जो हमने ये काम किया है, दैट वाज अ वेरी बिग थिंग टू यू एंड लेट्स डू दैट अगेन इन द नेक्स्ट टाइम। फिर दोनों चीज़ें थे हम लोग फिर। ग्रेट। सो किरण, आज के जनरेशन हम देखते हैं कि काफ़ी न्यू कमर्स हैं जो कि जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर्स करता है, राइट? एंड हमें काफ़ी नए प्रोजेक्ट मैनेजर नज़र आते हैं। मार्केट में काफ़ी डिमांड भी है कि दी पीपल नीड फ्रेश ग्रेजुएट्स एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर्स, राइट? लेकिन हमारे पास एक कंसर्न भी लोगों का बहुत ज़्यादा आ रहा है, राइट? कि since they are new, they are fresh, and the team is experienced enough, right? So they struggle with the team. And at the end, they are ending up in micromanaging them because otherwise they are not able to control them. Right? तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे कि व्हाट दे शुड डू, और या वो क्या स्ट्रैटेजीज या अप्रोचेस अडॉप्ट कर सकते हैं इन ऑर्डर टू नॉट entering into the space of micromanagement, but they can at least keep that balance, या at least थोड़ा सा इसको बेहतर तरीके से मैनेज कर पाए। 100% एग्री, दिस इज मीन साइकोलॉजी के जब दो एनिमल्स एक दूसरे के सामने आते हैं तो दे ऑलवेज जज ईच अदर कि हु इज बिगर। ठीक है ना, डिफाइंड होती है तो एनिमल्स इंक्रीज देयर साइज, ऊपर खड़े हो जाएंगे, ऊंचे हो जाएंगे। मैन काइंड जो है बेसिकली उसको इस तरह करती है कि वो ज़्यादा अच्छी चीज़ें खरीद लेती है। जो मैनेजर होता है वो कोट पहन लेता है ताकि उसको नज़र आए कि मैं मैनेजर हूँ, वो मैनेजर नहीं है। तो यू ऑलवेज ट्राई टू शो द अदर पार्टी के दैट यू हैव सम स्टैचर, यू आर ऑल्सो समथिंग। तो जब एक फ्रेश ग्रेजुएट को आपने बना दिया, एक प्रोजेक्ट मैनेजर कह लें या स्क्रम मास्टर कह लें, तो इट हैज़ टू बी वेरी क्लियर कि बेसिकली वो जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का अलावा उसकी अथॉरिटीज़ क्या है। अगर वो चीज़ें डिफाइन नहीं है ना, तो वो जिसको हम टर्म यूज़ करते हैं ना, वो बॉस बनने की कोशिश करना शुरू कर देता है। एंड दैट इज़ अ वेरी बिग पुट ऑफ दोज पीपल हु हैव स्पेंट ईयर्स
in their brain. तो अगर एक बंदा है, एक आर्किटेक्ट है, वो 15 साल लगा के उस पोजीशन पे पहुंचा है और वो जो है ओपन सोर्स शिफ्ट का या क्लाउड का उसका चैंपियन है, अब आप अभी फ्रेश ग्रेजुएट आए और आपको स्क्रम मास्टर की रेजिग्नेशन दे दी गई है, दिस डज नॉट मीन दैट यू आर दिस बॉस. दिस ओनली मीन्स you are responsible for those ceremonies which are associated with the scrum master. You are not his boss. You are a scrum master who is accountable to make sure that particular ceremonies happen as per that methodology agreed. And you must know what are the timelines and the deliverables which must happen. And you track that. If you have that understanding correct, you will never try to boss them. So the commitment, मतलब for me, long time back, मेरे साथ मैं प्रोजेक्ट मैनेजर बना है केआर के अंदर. मेरे साथ जो आर्किटेक्ट थे वो मुझसे 10 साल बड़े थे या 5 साल बड़े थे. एंड ही वॉज एन एक्सपीरियंस गाय जो पूरी ज़िंदगी जी है इसको लगाई. ही वॉज द आर्किटेक्ट. आई वॉज द प्रोजेक्ट मैनेजर. ही वॉज नॉट रिपोर्टिंग टू. आई वॉज वर्किंग विद हिम. My responsibility to make sure that the timelines are defined. My responsibility to make sure that the things get delivered. Yes, I learned agile project management by reading Kim Schwab and Mike Cohen, etc. Their books. By that time, there was no certification of agile of any sort. फिर मैं बात कर रहा हूँ 2009. उस वक्त कोई सर्टिफिकेशन नहीं थी. CSM में हाथ नहीं है नहीं. तो सबसे बुक्स नहीं है. बुक्स पढ़ के मैंने अपने बॉस को कहता है आई वांट टू अप्लाई दिस. मैं कर लूँ. तो he gave the authority, yes, as long as you are able to deliver this project in this time. Fine. So that is the autonomy. Yes, you have to deliver this by that time. How you do it, now it is up to you. I have given that liberty. So that person had the experience of 15 years in GIS. So I cannot be his boss. If I think myself as a boss of him, then obviously he is going to be put up with me. And obviously he is going to resist anything which I tell him or ask him. So my simple take was, I am working with you. This is my responsibility. Let's work together. I cannot make this happen without your help. Simple as that. So whenever I start my project, I say, I am depending on you. I cannot achieve anything if you are not with me. And if I am not able to achieve, it means we as a team will fail. If I will fail, it means you have also failed. If we agree on this, so let's talk about it. There is a complete openness and a trust develops based on that openness. All those Scrum Masters who are fresh and that given the board, they actually misunderstand the responsibility. Their responsibility is not to control people. Their responsibility to make sure that things are getting planned, things are getting delivered, dates are being tracked, quality is being tracked, all the KPIs are known, and if something happens which is not aligned, there is the flag. Solve eventually will be by the team itself, not by the Scrum Masters. If some company is hiring people on those contexts, that is wrong. PMI says even a nurse can become a project manager, but we all know if the nurse become a project manager of a civil project, how terrible experience would that be for that nurse? So the domain expertise always stops. You can be a good project manager based on the tools and technologies which are there, which are told to do. You are expert in them and you are going by the book. Yes, you can be a good project manager. But there is no work around if you don't have the subject matter expertise. You will not be able to do it. Uh, I think there's a lot to learn for me from this conversation, I think. And I'm happy that I met you today and we are having this conversation. So, Khurram, if I would go with my last question to you, कि वो piece of advice आप क्या देंगे project managers को, right? Who are listening to you now, कि अगर ये sweet spot fit करना है, right? ये balance strike करना है,
माइक्रो मैनेजमेंट और ऑटोनॉमी के बीच में, राइट? तो कैसे करें? कोई एडवाइस आपकी तरफ से? मैं ये कहूँगा कि आप सारी फॉर्मल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक तरफ रखते, इवेंचुअली it is people who deliver anything. So if you have this knack of being a friendly person, अगर आप दोस्ती करना जानते हैं लोगों के साथ, you will achieve a lot. If you are not to go, if you not taking easy to go with, तो and people feel stifled around you, तो आपको ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस मिलेगी. तो वो सारे लोग जिन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं पढ़ी होती, लेकिन उनको लोगों को साथ लेके चलना आता है, वो बिल्कुल डिलीवर करा दे, बेशक वो खुद भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बा. पीपल वर्क फॉर पीपल. पीपल वर्क इट। तो अगर वो आपके लिए काम नहीं करेगा ना, तो फिर वो काम अच्छा नहीं करेगा. तो अगर आप उसको एक कोई एरिटोक्रेट लग रहे हैं, कोई स्टिफ्ट नेक वाले बंदे लग रहे हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस मिलना शुरू हो जाएगी. फिर पीपल जिसको हम कहते हैं पैसिव रेजिस्टेंस, they will do the least possible because they just want to get over with it. They are not focused, क्योंकि आप उनको मजे के बंदे नहीं लग रहे, तो वो आपके साथ काम नहीं करना चाहते हैं. अब क्या है, दो ही चीज़ें रह गई. यदि उनको या तो तनख्वाह चाहिए, तो तनख्वाह कैसे मिल सकती है कि जो मैं बेर मिनिमम है वो कर दूँ. अनलेस अनटिल द पर्सन इज क्या कहते हैं ना, वो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड है. वो कहता है यार प्रोजेक्ट मैनेजर जो भी हो, मुझे तो इस चीज़ का शौक है, तो वो चीज़ किए रहेगा. लेकिन प्रॉब्लम इज़ दिस कि जब आपने टीम काम करना है, तो सब चीज़ें वो ना एक साथ बैठना चाहिए. अगर वो नहीं बैठेंगे तो एक बहुत ज़्यादा अच्छा भी कर ले है ना, तो दूसरे जो है उनकी वजह से उसका काम ख़राब हो जाएगा. ये बिल्कुल ऐसे ही है. और रिलेशन में कहते हैं, एग्जांपल दी जाती है रोइंग. तो जब रोइंग करते हैं, तो रोइंग का जो मैक्सिमम आउटपुट आता है वो जोर लगाने से नहीं आता. मैक्सिमम आउटपुट आता है जब सब के सब सिंक्रोनाइज्ड होती. इफ द सिंक्रोनाइजेशन इज नॉट देयर, तो अगर 6 लोगों ने यूं किया है और साथ में ऐसे कर दिया, तो उसने जो 6 लोगों की है वो सारी फ्लो तोड़ दिया. हाँ। फॉर द टीम वर्क टू हैपन, द थिंग्स नीड टू बी सिंक्रोनाइज्ड. अगर मैं हार्मनी में नहीं है पूरी टीम एक साथ, तो आउटपुट एज ए टीम जो है ना, एज ए ग्रुप, वो आउटपुट 100% नहीं आएगा जो आ सकता. वो उससे हमेशा कम होगा, क्योंकि बेसिकली बिटवीन द फ्रिक्शन जो है ना, को प्रॉब्लम करेगी. तो आप एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, अगर आप लोगों के साथ दोस्ती कर सकते हो, तो आप बहुत ज़बरदस्त से अचीव करें. लेकिन अगर आपके साथ प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से लोग आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो डेफिनेटली जो आउटपुट है वो कम. तो पहली कोशिश आपको एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर ये है कि अगर आपकी गर्दन में क्लफ लगा हुआ है, तो प्लीज़ उसको उतार दें सबसे पहले. क्योंकि यूजुअली प्रोजेक्ट मैनेजर जो है, आप या तो आप फंक्शनल डिपार्टमेंट में हो और आप उसी में ग्रो करके आप सीनियर मोस्ट हो गए हैं, तो यू आर ऑलरेडी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, आपको प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया गया, तो पीपल रिस्पेक्ट यू, क्योंकि आप उन सबसे ज़्यादा जानते हैं. लेकिन अगर आप एक ऐसे प्रोजेक्ट मैनेजर स्क्रम मास्टर है जो बेसिकली बाहर से आ रहे हैं, उस डोमेन का एक्सपर्ट नहीं है, उसको एक्सपर्ट्स के साथ काम करना है, तो यू मस्ट नॉट एज्यूम दैट यू आर देयर बॉस. अब आपने जो है ना, उनके गोटे गिट्टे पकड़ के जो है ना, उनसे दोस्ती करनी है, ताकि वो आपके साथ कंफर्टेबल हो और आप उनके थ्रू फिर आउटपुट लेके आ सकें. तो अगर आपने दोस्ती नहीं की, चूँकि आप वैसे जूनियर हैं और वो सीनियर है, तो आपको भगा देंगे उसको. तो दोस्ती करना बड़ा ज़रूरी है. फिर उनको कन्विंस करना है कि बेसिकली आप जो काम कर रहे हैं, वो बेसिकली उनके ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, और जो आप आउटपुट देंगे, वो उनका आउटपुट. तो इफ़ यू लुक बैक, इट मीन्स दे आर ऑल्सो लुकिंग बैक. अगर ये चीज़ कन्विंस हो जाती है ना, तो सारी चीज़ें लाइन में आती है. लेकिन अगर हम ये कह दिए कि मैंने तो ये अचीव किया, टीम नहीं कर सकी, तो इसका मतलब आप कुछ और है, वो कुछ और. हुँ। तो ऐसा है नहीं, ऐसा होता नहीं है. बहुत ही हम साथ-साथ हैं, राइट? both of us work together. Great. Thank you so much, Karram, for giving us your time today. I think it was a very useful conversation. काफ़ी अच्छी हमारी जो है वो डिस्कशन रही है इस टॉपिक के ऊपर. And thank you so much for watching us. And if you have any suggestion about the content, अगर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, रियल टाइम प्रॉब्लम्स हैं जो कि यू वांट कि हम उसके ऊपर कंटेंट पर काम करें, do share with us in our comment and we definitely work on it and we'll definitely get back to you. Thank you so much, Sharmila. I loved it.